Hello and welcome to Kashmir Now. I'm your host Akansha Parimu. Let's take a look at what made news this week. POJK faces uproar as students protest for basic facilities. Kashmiris continue to cherish centuries-old Sufiana and traditional folk music. Students step into history as Heritage Walk marks World Heritage Week in India's Kashmir. And PMGSY sparks hope in JNK's Badarwa as Chanti Tatora Road project takes off. In our Incredible India segment, we'll explore how the country's ancient heritage, spiritual depth and cultural values continue to influence the modern world, attracting global travelers seeking wellness, inner balance, personal transformation and meaningful understanding of life today and beyond. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir's Rawalakot, anger burst into open resistance as students of Poonch University locked the campus gates, rejecting what they call an unbearable fee hike and a complete collapse of basic facilities. Their protest exposes the widening gulf between an indifferent administration and a struggling student community pushed to the edge. With clear voices and firm resolve, they are declaring that education is not a privilege for the wealthy, but a fundamental right that can no longer be denied. We have a report. In Pakistan-occupied Jammu and Kashmir's Rawalakot, the protest at Poonch University reflects a deeper crisis where students feel their basic right to question has been silenced by an unresponsive administration. Despite paying high fees, they say they are forced to study without proper facilities, transparency or accountability. Their struggle highlights how power is being used to suppress legitimate concerns instead of improving the system, leaving students to fight for the very education they are already paying for. हम इससे पहले भी आपसे जीते, हम इसके बाद भी आपसे जीतेंगे, इस क़याम की गाली में ना रहे। ये इदारा हमारा घर है। हम ये कह रहे हैं कि आप भी इस घर की बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएं, हम भी 2 कदम आगे होकर इसकी बेहतरी के लिए इक़दाम उठाएंगे। 1.5 करोड़ रुपया हम 6 माह का आपको देते हैं, वो किधर जाता है? फिर अगर हम ये भी पूछना गवारा ना करें तो आप अगर पूछ भी लें तो आप अगर बदमाशियां और डिग्रियां खत्म करने की धमकी देंगे तो इस डिग्रियों को लेके हम क्या करेंगे? जो डिग्री अगर हमें हक की बात कहने से रोक रही हो, जो डिग्री अगर हमें सच बात कहने से रोक रही हो। At Poonch University in POJK, students say they were left with no choice but to protest after months of being ignored. Their repeated appeals for clean drinking water and basic facilities were dismissed, and even the act of asking a question was treated as defiance. Inside the campus, they now stand united against an administration that punishes truth instead of addressing failures. In a place where speaking up is branded a crime, students are fighting simply to be heard and treated with dignity. आपने इनके साथ वादा किया है कि यहाँ पे एक पीने का साफ पानी, कैसी बदबख्ती और बेगैरती की इंतहा है कि कहा जाता है मिसालें दी जाती है नमल यूनिवर्सिटी की, मिसालें दी जाती है कायदे आजम यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे पीने का साफ पानी नहीं मौजूद। और फिर आप हमसे अगर ये कहेंगे जी आप लोग एहतजाज न करें, हम एहतजाज न करें तो किधर जाएं? हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हक की बातें की, हजरत हुसैन ने हक के लिए अपनी आवाजें उठाएं, आप भी हक के लिए आवाज उठाएं। तो क्या ये हक नहीं है हमारा कि हम सिर्फ इतना आपसे पूछ सके कि जो फीसिस आप हमसे सहूलियात की बुनियाद पे ले रहे हैं वो सहूलियात हमें मुयस्सर क्यों नहीं कर रहे? अगर ये कोई हमारा जुर्म है तो मैं ये समझता हूँ, मैं तो पीछे हूँ, मुझसे आगे ये जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं, ये जो हमारे भाई हैं, ये मुझसे 2 कदम आगे होकर आपके खिलाफ उठे हुए हैं। The situation in POJK reflects a deeper crisis that extends far beyond a single campus. Basic human rights are repeatedly sidelined by Pakistan as people struggle with failing institutions, limited access to quality education, and an administration that remains unaccountable. Students grow up in an environment where even essential facilities like water, classrooms,
and safe spaces are uncertain. The protests reveal a harsh truth. An entire generation is being pushed to fight for the bare minimum, while their right to learn, live with dignity, and build a better future is repeatedly undermined. Kashmir's timeless cultural heartbeat continues to resonate through its soul-stirring Sufiana and traditional folk music. Rooted in 5,000 to 7,000 years of rich heritage, these spiritual melodies remain deeply cherished even in today's modern era. Despite changing trends, Kashmir's iconic Sufi poetry, sung by renowned Wali artists, still captivates devoted audiences and preserves the region's profound cultural identity. Have a look. Kashmir's spiritual and cultural charm shines brighter with every passing generation. Sufi poetry, revered for its divine essence, is believed to connect the soul directly with the Creator, bringing listeners unmatched peace of mind. Equally beloved is the traditional folk music, Chhakri, which commands a large and loyal audience, drawing massive crowds to festivals where both Sufiana and folk performances remain top attractions. जो हमारा जो सूफियाना मौसीकी है और ट्रेडिशनल छकरी है, जिसको हम यहाँ छकरी कहते हैं, फोक म्यूज़िक कहते हैं इंग्लिश में, ये सदियों से आ रहा है। ये जो हमारा सूफियाना कलाम है, ये हमारी ये कश्मीर वादी सूफ़ी संतों की वादी है। ये यहाँ महफिलों में भी गाया जाता है, चाहे किसी ऐसा शमस साहब का कलाम हो, वहाब साहब खार का कलाम हो, अहमद पटवारी साहब का कलाम है। ये जितने भी हमारे सूफ़ी शायर गुज़रे हैं, इनका कलाम महफिलों में गाया जाता है। ये एक रिवायत रही है यहाँ कश्मीर में, चाहे सदियों पुरानी रिवायत रही है इस छकरी की या सूफियाना मौसीकी की। इसमें जो आजकल नई जनरेशन के नौजवान कलाकार भी जुड़ रहे हैं, जैसे मैं एक फोक आर्टिस्ट हूँ, जितने भी जो इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, रबाब को ही बजाता है, सारंगी बजाता है, गड़ा बजाता है, नौजवान नस्लें भी इससे राग़िब होती है। Kashmir's artistic brilliance once again takes center stage as its celebrated folk singers bring Sufi poetry to global prominence. Their powerful renditions have set a remarkably high standard, earning admiration not only in Jammu and Kashmir but across the world. Such deep devotion is reflected in how Sufi music lovers honor the anniversaries of iconic Sufi poets year-round, celebrating their timeless wisdom and preserving their sacred cultural legacy with heartfelt pride. पूरे दुनिया में आप जाइए, आप हर एक जगह पे अपना अपना फोक है। चाहे राजस्थानी, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, राजस्थानी फोक है, गुजराती फोक है, ऐसे ही हमारा कश्मीर का फोक है, जिसके साथ हम लोग मुंसलिक है। रहा सवाल कि यहाँ तो 2-3 परफॉर्म, या तो सूफियाना मौसीकी है या लाइट म्यूज़िक है, जिसको हम इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक कहते हैं, या हमारा छकरी और रुफ जिसको हम कहते हैं, वो फोक है, फोक ट्रेडिशन। Kashmir's spiritual heartbeat continues to echo beautifully through its cultural traditions. Even as modernization and digital distractions grow, many still recognize the profound value of Sufi poetry and gather to experience its depth. In these soulful mehfils, the Valley's finest folk artists perform in their signature Chhakar or Chhakri style. This heritage must be preserved, for Sufi poetry is not mere writing, it is a heartfelt spiritual offering created by the great Sufi saints of the past. बिल्कुल सही आपने फरमाया। जो हमारी ये लोक मौसीकी है, इसकी रवायत कश्मीर में बहुत पुरानी है। यहाँ हमने क्लासिकल मौसीकी में हम सूफियाना मौसीकी, छकरी, रुफ, दास्तान गोई, इसकी रवायत कश्मीर में बहुत पुरानी है और आज भी ये रवायत बड़ी अच्छी तरीके से ज़िंदा हम रखे हुए हैं। मैं 3-डे इंटर स्टेट कल्चरल इवेंट, इसमें हमारे देश के बहुत सारे रियासतों के कलाकार आए हैं, यहाँ अपना प्रेजेंटेशन करें। इसमें कश्मीर के भी फनकार हैं, उन्होंने क्लासिकल मौसीकी गाया है, छकरी गाया, रोप गाया है, रशीद हाफिज़ साहब ने, गुलजार गनाई साहब ने, इसी तरह उस्ताद ये क्या बोलते हैं याकूब साहब ने गाया है ये सूफियाना मौसीकी। इसको बड़े शौक़ से और बड़े सब्र के साथ यहाँ की जो ऑडियंस थी और बड़ी संजीदा ऑडियंस, उनने पसंद किया है।
Kashmir Sufiana and traditional folk music continue to reflect the valley's spiritual depth and centuries-old cultural brilliance. Even as modernization reshapes lifestyle, the devotion of Sufi poetry and Shakri remains strong. Today, Jammu and Kashmir is witnessing remarkable overall development, better infrastructure, cultural revival, tourism growth, and renewed stability. Preserving these soulful traditions alongside this progress ensures that the region's rich heritage grows hand in hand with its modern transformation. A special heritage walk was organized to mark World Heritage Week, aiming to educate and inspire the youth about Kashmir's rich cultural legacy. The event highlighted the region's architectural wonders, traditional art forms and historical monuments, encouraging young participants to understand the importance of preserving their heritage. Through such initiatives, organizers hope to strengthen awareness, pride and responsibility among the next generation in safeguarding Kashmir's timeless cultural identity. Take a look. The Department of Archives, Archaeology and Museums JNK marked World Heritage Week with a vibrant heritage walk held from the historic Shergadi complex to the iconic SPS Museum in Srinagar. The event brought together students, historians and heritage enthusiasts, offering them a chance to explore and learn about Kashmir's rich cultural, architectural and artistic legacy. The initiative aimed to deepen awareness among the youth and inspire greater appreciation and responsibility toward preserving the region's heritage. आज हम यहाँ हेरिटेज वीक मनाने आए हैं। आज हमारा हेरिटेज वॉक हो रहा है यहाँ पर, तो हमें इससे मतलब मदद मिलती है कि हम कैसे अपने हेरिटेज को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऐसी चीज़ें होनी चाहिए ताकि हमें इसके बारे में और ज़्यादा नॉलेज मिले और हम दूसरों तक भी नॉलेज पहुँचा सकें। One of the key goals of the Heritage Week celebration was to educate young people about the significance of heritage conservation. During the walk, students took part in interactive sessions and discussions that helped them understand the value of protecting historical monuments, traditional crafts and cultural practices. जी नॉलेज बहुत मिलती है आजकल के ज़माने में, जैसा हमारा हेरिटेज वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब जो आने वाली न्यू जनरेशन है उनको पता चलेगा कि हमारे कश्मीर में कितनी ज़्यादा, हमारे कश्मीर कितना फेमस है हमारे हेरिटेज से, जैसे कि हमारे मोनूमेंट्स है, हमारे टेम्पल्स है, हमारे मॉस्क्स है, हमारे मतलब वारे के चीज़ थे हमें वो देखने को मिलते हैं। स्टडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं अपनी बात करूँगा, मैं अपनी बुक लिख रहा हूँ द कश्मीरी हेरिटेज, जो कि मेरे हाथ में है अभी, तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री जानने के लिए अपनी बुक के लिए। Participants later walked along the picturesque banks of the Jhelum River, pausing at important heritage spots along the route. The event was further elevated by the presence of notable personalities, including Divisional Commissioner Kashmir Anshul Garg, whose participation added prestige and significance to the heritage walk. देखिए, ऐसा है कि वर्ल्ड हेरिटेज वीक हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं और इस साल भी 19 से लेकर 25 तक सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर को मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा कि रूटीनली हर साल इस एक्टिविटी को ऑर्गेनाइज करते हैं और बड़ा अहम है इस चीज़ को जानना कि हमारे बहुत सारे ऐसे हेरिटेज के ट्रेजर्स हैं जो सदियों से हम प्रिजर्व कर रहे हैं और आने वाली जनरेशन्स को भी हम उसी तरीके से उसके बारे में अवेयर कराएं। हमारे बहुत से ऐसे यूनिक आर्ट्स हैं, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, कल्चर है, चाहे वो स्पिरिचुअलिटी हो, चाहे वो टूरिज़्म हो, बहुत सारे ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में हम लोगों को अवेयर करने की कोशिश करते हैं। In this spirit, the Heritage Walk offered a valuable platform for participants, especially youth, to reconnect with Kashmir's rich history and timeless traditions. The initiative reflects the commendable efforts of the JNK administration in promoting cultural awareness and heritage education. Such extracurricular programs not only deepen youth engagement but also increase participation, instilling a strong sense of belonging, pride and ownership in the cultural identity of the valley. In a major boost to rural connectivity, work on the much-awaited Chanti-Tatora Road has finally begun under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana, bringing new hope to local residents. For decades, villagers struggled with isolation, lack of access to schools, healthcare and basic services. Today, with machines on the ground and construction underway, the community celebrates a transformative step toward development.
This project aligns with the Prime Minister's vision of stronger rural infrastructure and a truly Viksit Bharat. Let's take a look. A historic moment has arrived for the residents of Chanti Tatora village in Gagot Panchayat, Baderwa, as construction of a long-awaited road has finally begun under the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. After decades of living without proper connectivity, the villagers are witnessing their long-standing demand turn into reality. The new road marks a major step forward in fulfilling Prime Minister Narendra Modi's vision of strengthening rural infrastructure and uplifting remote communities. आज बड़ी खुशी है हमें कि यहाँ पर जो PMGYS रोड जो निकला है, हमें उम्मीद नहीं थी कि हम गरीब लोगों तक ये रोड पहुँचे। तो आज हम बड़ी प्रधानमंत्री का तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं कि उन्होंने हम गरीबों को मद्देनज़र रखते हुए और एडमिनिस्ट्रेटर डोडा DC साहब और तहसीलदार साहब बाला का शुक्र अदा करते हैं। उन्होंने काफ़ी साथ हमारा दिया और गरीब लोगों तक ये रोड पहुंचाई। और आज हम कंडक्ट हुए शहर के साथ कि आज हमारी कोई भी मांग होगी हम लोग कर सकते हैं और हमारी डेवलपमेंट आगे हो सकती है। तो इस लहजे से अब काफ़ी पिछड़े हुए हमारे बुजुर्गान भी यहाँ से मर चुके क्योंकि हमें रोड नहीं मिला। 50-60 साल से हमारी मांग थी कि हमें रोड चाहिए, मगर रोड नहीं मिला। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब के दौरान में हमें ये रोड मिला और PMGYS रोड जो आज हमारा रोड में काम चला है और बड़ी अच्छे तरीके से काम चला है। हम लोग सब खुश हैं और तहे दिल से गवर्नमेंट का शुक्र अदा करते हैं। आज हम भारत सरकार का और केंद्र सरकार का इतना शुक्रगुजार हैं, एडमिनिस्ट्रेशन का इतना शुक्रगुजार हैं कि कहने की कोई बात ही नहीं है। इतना हम कह नहीं पाते हैं कि कितने हम खुश हो गए जो हमारी रोड सैंक्शन हो गई है। आज मशीन भी लग चुकी है और हमारी जितनी जनता है सारी खुश है। With the start of road construction, school students in the area finally see a hopeful future. Earlier, many were forced to discontinue their studies due to absence of proper road connectivity, making daily travel nearly impossible. Now, with this long-awaited project underway, families believe their children will be able to return to school regularly. The villagers are deeply grateful to the government for turning this long-held dream into a life-changing reality. ये रोड अब आ गई है तो 7 किलोमीटर दूर हमें जाना पड़ता था स्कूल के लिए। इससे हमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। जब तक कि हम स्कूल पहुंचते तब तक हमारी यूनिफॉर्म ख़राब हो जाती थी। इसके कारण मतलब रोड के कारण कुछ ऐसा हुआ कि हमारे जो पहले जो हमारे बच्चे थे हमारे गांव के वो पढ़ नहीं पाए इसी वजह से, क्योंकि उन्हें बहुत दूर जाना पड़ता था। तो अब जो है हम टाइमली स्कूल पहुंच पाते हैं, टाइमली अपनी क्लास अटेंड कर सकते हैं। तो मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ। The project, costing an estimated 12 crore rupees, will span 4.5 kilometers and directly benefit over 100 residents of the village. Once completed, the new road will connect Chanti Tatora with Baderwa town, providing faster access to markets, healthcare facilities, schools and essential emergency services, significantly improving daily life and development opportunities for the community. लोग बहुत खुश हैं। लोग जो है मुबारकबाद देते हैं अपनी सरकार को, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन को, क्योंकि रोड जो है, रोड कनेक्टिविटी ही किसी इलाके की जो है डेवलपमेंट की सीढ़ी है। तो बिलाखिर हमारा जो ये इलाका बिछड़ा हुआ था, तो अब जो है रोड जो है उस इलाके में जुड़ गई है और हम भी अब शहर के साथ जुड़ जाएंगे और हमारी जो हिंदुस्तान डेवलप हो रहा है, विकसित भारत का जो सपन ख्वाब जो हमारे मोदी जी ने देखा है, उस विकसित भारत की दौड़ में आज हम भी शामिल हो गए, क्योंकि हम भी रोड की वजह से पूरे शहर से कनेक्ट हो रहे हैं। The Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana project has sparked a wave of positivity in the region, with locals celebrating the start of a long-awaited transformation. This is the first time they feel genuinely connected to the mainstream. Infrastructure projects including roads, bridges and digital connectivity have transformed remote areas, while improvements in education and healthcare have enhanced quality of life in Jammu and Kashmir. The people of the region now feel more connected with the rest of India, participating actively in economic,
cultural and social progress, fostering a sense of inclusion and growth. Indian culture is one of the world's oldest and most vibrant, continuing to inspire with its timeless wisdom of life, spirituality and humanity. From worship and meditation to yoga, its ancient traditions have transcended borders, shaping modern lifestyles across the globe. Every year, countless people from around the world travel to India in search of mental and physical well-being, peace of mind and spiritual fulfillment. Have a look. With its depth, balance and message of peace, Indian culture has evolved from being a national identity to a global inspiration. In today's fast-paced and stressful world, yoga, meditation and ancient rituals offer a path to harmony, uniting body, mind and soul. They bring inner calm and spiritual strength, which is why people across the world are turning to India's timeless wisdom for peace and well-being. Meet Pamela from Argentina, who has come to India in search of spiritual growth and inner peace. From the moment I reached to India, I feel very connected to this culture. I don't know, I cannot explain why, but suddenly I love temples. I love pujas and homas. It's like my passion. And I always say this to every Indian: you should feel proud that this knowledge comes from your land, which is helping so many people across the world to feel free from within. Yoga is one of India's most precious gifts to the world, a timeless practice that nurtures not just the body but also brings harmony to the mind and soul. Born thousands of years ago, this ancient discipline has evolved into a global way of life. Once seen purely as an Indian tradition, yoga today transcends borders, symbolizing physical vitality, mental peace, and a spirit of universal unity. True yoga goes beyond exercise. Yoga as an exercise is just one small component. Yoga is something that leads you to stillness, allows you to connect with yourself and go deeper within. And when that happens, there's a certain amount of tranquility, centeredness that comes within you. And then you are in a better space to respond to life rather than just react. And that is why the yoga has now become much more popular. People have started recognizing it. When it comes to yoga, meditation and Sanatan culture, the Art of Living Center in Bengaluru stands as a global symbol of Indian spirituality. Founded by Sri Sri Ravi Shankar, the institution promotes Indian philosophy across more than 180 countries. Situated just 15 miles from Bengaluru, the Art of Living International Center welcomes thousands each day who come to learn yoga, meditation and the powerful breathing technique known as Sudarshan Kriya, a practice that continues to inspire seekers from around the world. I'm an Art of Living teacher, also breathing courses and yoga teacher. And in Europe it is very much needed, especially nowadays. There's a lot of stress and people are facing a lot of anxiety and depression, and these things are immensely helpful to deal with the lifestyle today. The Art of Living Center in Bengaluru is remarkable in many ways. Its vast community kitchen runs 365 days a year, serving fresh, wholesome meals from dawn to dusk. Alongside 150 dedicated staff, countless devotees and volunteers lend their hands in service. On a regular day, around 25,000 people are fed, and during special occasions, that number soars to nearly 100,000, making it a living example of compassion in action. यहाँ डेली नॉर्मल डेज में 25 से 30 हज़ार लोग का खाना बनता है। पूरा सात्विक खाना है, हाइजीनिक खाना है। Among the many courses offered here, the Sudarshan Kriya, a simple yet powerful breathing technique, remains the most popular. The center also conducts unique programs like the Intuition Process, designed for children under 18.
It helps them awaken their sixth sense, enhancing focus, confidence, and intuitive decision making. Skills so sharp that some can even recognize objects or ride a bicycle blindfolded. One of the biggest changes that I saw after doing intuition process with regular practice was in my confidence level. Previously, before the course, I used to be shy. I used to be nervous in talking to people. I had that fear of unknown for any person or any situation. But after doing intuition process, as I got regular in my practice, I noticed that fear vanished, and I'm able to face any situation with lots of confidence as well as with lots of smile, with calm. Set amidst lush greenery and a tranquil lakeside, the Art of Living campus exudes peace and harmony. From cultural programs to humanitarian and environmental initiatives, its vibrant energy inspires everyone who visits. People from India and across the world return home touched by its spirit, carrying with them messages of positivity, peace, and compassion. That's all we have for you in this week's episode. Goodbye and take care.